नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विथ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। I would like to start this video with the beautiful lines of Richard Feynman, who was a physicist and greatest person known in his field. He said, "Knowledge is not free, you have to pay attention." And it's very much true that if you want to excel in your life, it's very important to pay attention to the proper things. So today's video is all about focus and concentration, how to improve your focus and concentration, and I'll give you the scientific tools which are very easy to execute and which are very highly scientific but easy to execute in a real life. Any normal person like you and me can execute it in your life and enhance your focus and concentration in leaps and bounds. So let's see the tools for sharpening your focus and concentration. So the before getting into the details, I would like to explain some neuroscience of the focus and concentration, because if you don't know the mechanism which chemicals are involved in sharpening your focus and concentration, it becomes difficult to understand the tools and to get the overall knowledge of the science focus and concentration. Sorry. Now if you consider this, I would like to consider this part of this arrow as the chemical acetylcholine. There are three chemicals which are responsible for the focus and concentration. First is acetylcholine. This shaft of the arrow, this part of the arrow, we will consider it as the epinephrine, which is also known as adrenaline. And to keep this system, if this arrow wants to move from its place, then it can move only with the help of the third chemical, that is dopamine. Now, in order to make this arrow functional, we need all the three chemicals. In the same way, in order to have a sharp focus and concentration, in order to have a laser-like focus and concentration, we must have these three chemicals. When you have these three chemicals in your mind, then automatically you will have a sharp focus and concentration. So these three chemicals, acetylcholine, epinephrine, and dopamine, plays a pivotal role in order to इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन. अगर ये तीन केमिकल आपके माइंड में है तो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. नाउ अगर ये केमिकल्स नहीं है तो ऑब्वियसली फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, कम होगा. नाउ इट्स हाईली लॉजिकल, एनी टूल which increases the amount of acetylcholine, epinephrine and dopamine in your mind will help you to enhance the focus and concentration. So we'll see what those tools are. Now, before getting into the tools, I want to highlight some characteristics of the human focus and concentration, because there are a lot of myths present in the society. काफ़ी myths है focus and concentration के बारे में, जो first I want to demystify it and then I'll go into the tools. So first thing that it's very important, जो characteristic है human focus का, that none of us should expect to sit down and drop directly into the state of focus. मोस्ट ऑफ अस हम क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे ही हम पढ़ाई, फॉर एग्जांपल आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो यू कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द स्टेट ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन. इट योर माइंड टेक्स टाइम टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. So that's why we should not expect us to get directly into the state of focus and concentration. तो थोड़ा समय लगता है फोकस एंड कंसंट्रेशन की स्टेट में जाने के लिए. सो इफ यू एक्सपेक्ट इट देन वो इट्स नॉट गुड. इनफैक्ट your mind doesn't work in that way. Your mind takes a time to make a transition into another state. तो जिस तरीके से अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो, यू नीड टू वार्म अप योर बॉडी बिफोर डूइंग अ मेन वर्कआउट. आप क्या करते हो, वार्म अप करते हो. इन द सेम वे फोकस एंड कॉन्सेंट, जैसे आप पढ़ाई को बैठते हो तो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, डीप फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन की स्टेट में जाने के पहले यू नीड टू योर माइंड वार्म ऑफ. तो आपका माइंड खुद को वार्म अप करता है. योर माइंड स्टार्ट वार्मिंग इटसेल्फ, एंड दैट वार्मिंग इज नथिंग बट
रिलीजिंग ऑफ द केमिकल जो हमने पिछले साइड में देखा था, दैट इज एसिटोकोलिन, देन डोपामिन, एंड थर्ड इज नथिंग बट योर इपिनेफ्रिन. सो जैसे यहाँ पे आप मेन एक्सरसाइज करने से पहले ग्राउंड पे जब आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू वार्म अप योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनटू योर मेन रूटीन और मेन स्केड्यूल ऑफ द डे. इन द सेम वे पढ़ाई को जब आप बैठते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू ड्रॉप डाउन डायरेक्टली इनटू द स्टेट ऑफ फोकस. तो उसके पहले वार्म अप आपका होता है. वार्म एक्चुअली माइंड ऑटोमेटिक करता है, दैट वार्म अप इज नथिंग बट रिलीजिंग ऑफ द केमिकल एसिटिकोलिन, डोपामिन एंड इफिनेफ्रिन. सो मेक श्योर दैट जब आप नेक्स्ट टाइम बैठोगे तो अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कि कुछ समय तक, तो डोंट बीट योर सेल्फ अप, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. इट दिस इज द वे योर माइंड वर्क्स. एक्चुअली आपको थोड़ा समय लगता है to get into the deep focus and to get into the state of deep focus and concentration. Second thing about the human focus and concentration is this, that it is dynamic. इसका मतलब ये होता है कि you cannot expect to be in the same state of focus and concentration for a longer period of time. मतलब वो highly dynamic होता है. कभी for example if you are studying for the 1 hour, you cannot expect that कि आपका जो focus and concentration throughout the period of 1 hour same रहे. It is not possible. Maybe for 15 minutes you will be highly focused, next 15 minute, next 10 मिनट में फोकस एंड कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, नेक्स्ट 15 मिनट में ज़्यादा रहेगा, देयर विल बी सम डिस्ट्रैक्शंस आल्सो. सो दिस इज द वे योर फोकस एंड कंसंट्रेशन वर्क्स. तो यू कैन डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन थ्रू आउट द स्टडी बाउट, थ्रू आउट द लर्निंग सेशन सेम रहेगा. नेक्स्ट, दैट इट इज़ एन एबिलिटी. इसका मतलब इफ इट इज एन एबिलिटी देन इट कैन बी इम्प्रूव, इट कैन बी इन्हेंस्ड. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्ट ऑफ अस फील दैट फोकस एंड कंसंट्रेशन इज लाइक कि है मेरी इतनी औकात है, मैं इतना ही फोकस कर सकता हूँ. दीज आर ऑल प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड नोशन विच आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी. सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जाती है और हमें भी लगता है कि इसको हम नहीं बना सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन always sharpen your focus and concentration, you can improve it because it's an ability. जैसे कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल टू 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 प्ले गुड क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के लिए फॉर एग्जांपल आपको बैटिंग करना है, बैटिंग करना सीखना है, तो इट्स एन स्किल. स्किल जैसे कोई भी स्किल ले लो, उसको सीखने के लिए जैसे समय लगता है, इन द सेम वे फोकस एंड कंसंट्रेशन इज अ स्किल, इट्स एन एबिलिटी. तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो provided that we know the science of focus and concentration. Now, how long one can focus? This is the million-dollar question which need to be answered in the entire Indian society and all the students, because no one is talking about it, and there are a lot of myths present when it comes to how long one should focus. Now, according to research, a human mind can focus for the maximum time of 90 minutes. It has some revolutionary psychology, so not sorry evolutionary psychological reasons, because human mind hasn't been designed to focus on a single task for a longer period of time. सो माइंड बना ही इस चीज़ के लिए, माइंड बना नहीं है एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए. तो at max you can focus on any single task for a 90 minute, and that too with the help of the meditation. अगर आप आपके माइंड को ट्रेन करते हो तो at max you can focus 90 minutes on a task. It is not exactly 90 minutes, it is around, it's like 85 or 80, sometimes 70, 60 minutes. So on an average we take it as a 60. That's why I always when I counsel students, I always recommend them to sit for study and focus. एक पढ़ाई का स्लॉट उनका आई ऑलवेज रिकमेंडेड टू 1 घंटा होना चाहिए. तो 1 घंटे के बाद इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज 1 घंटे बाद लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू कैन नॉट फोकस. नाउ हमें दो यू फील कि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लग रहा है 2 या 3 घंटा, बट ऐसा नहीं होता है. 1 घंटे के बाद आपका लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट्स एंटरिंग एंड यू कैन नॉट फोकस प्रॉपरली. तो जो भी 1 घंटे के बाद आप पढ़ोगे वो आपके लेस प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, दिमाग में नहीं जाएगा, आपके मेमोरी में नहीं घुसेगा. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस, ऑल द मेंटल प्रोसेसेस इज दिस,
there is a no instrument to measure these mental processes. Like just think, is there any instrument to measure your focus and concentration? कोई instrument है क्या जिससे आप आपका फोकस और कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट. Can you measure the amount of stress you are facing right now? Can you measure your level of happiness? No. So this is the problem. That's why we need to rely on the studies which are being conducted in the high-tech laboratories which I am discussing over here. So that's why 90 minutes you can focus, that too with the help of the meditation. If you are training your mind on a daily basis, then only you can focus at max 90 minutes. Otherwise, take it as a 1 hour. Now, next is our ability to focus is not just related to what happens during the entry and the movement through those focus bouts, but after those focus bouts. Now, it's very important point, and ये बहुत लोगों को नहीं पता है. Most of time, जैसे मैंने कहा था कि your mind takes time before getting into the before getting into the state of focus and concentration. थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम लगता है. नाउ आप फॉर एग्जांपल आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 घंटा के पहले आपने क्या किया एंड ड्यूरिंग 1 घंटे में क्या पढ़ा, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस 1 घंटे के फोकस के बाद आप क्या कर रहे हो. दिस फॉर एग्जांपल ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये समय ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल यू फोकस्ड इन 1 आवर, मतलब यू हैव 1 घंटा आपने काफ़ी फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ 1 घंटा पढ़ाई की. अब 1 घंटे के बाद आई ऑलरेडी टोल्ड यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स. 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ इस 5 से 10 मिनट में आप क्या करते हो, दैट डिटरमाइंस एवरीथिंग कि आपका नेक्स्ट 1 आवर में पढ़ाई कैसे होने वाली है. तो इस 5 से 10 मिनट में अगर आप फिर से फोकस कर कोई भी टास्क करते हो जिसमें फिर से फोकस एंड कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो सीधा उसका इम्पैक्ट आपका नेक्स्ट पढ़ाई के स्लॉट में होगा, नेक्स्ट स्टडी सेशन में होगा. तो इस 5 से 10 मिनट में आपको ऐसी चीज़ें करनी है विच आर फंक्शनल फॉर योर रूटीन, बट विच डजेंट रिक्वायर मोर फोकस एंड कंसंट्रेशन. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें आपको करनी होगी जो आप नॉर्मल रूटीन में करते हो, और कोई ऐसी नई चीज़ नहीं करनी है जिसमें फिर से फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़े. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. So what you can do, you just can take a walk, you can help your mom, you can help your mother in her task, family के काम कर सकते हो 5 से 10 मिनट में. You can listen to music, you can do anything except कोई other task जिसमें focus and concentration की ज़रूरत हो, you should not do in this 5 to 10 minutes. It's called deliberate decompression. इसको हम deliberate decompression बोलते हैं. Deliberate decompression. सो या आप पढ़ाई के पहले ड्यूरिंग आवर्स क्या करते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. बट पढ़ाई के उस 1 घंटे के बाद, उस 1 घंटे का जो पढ़ाई का आपका सेशन था, उसके बाद आप वो 5 से 10 मिनट में क्या करते हो, दैट डिटरमाइंस कि आपका अगला 1 घंटे का स्लॉट कैसे जाने वाला है. आई होप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. नहीं समझा तो I request you to go back and watch the video again and try to understand it. The last but not least is the more you can focus, the fewer deep work concentration bouts you can perform each day. Now, this is highly paradoxical. मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप जितना डीप आपका फोकस और कंसंट्रेशन होगा, उतने कम लर्निंग सेशन आप कर पाओगे एक दिन में. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आपके लर्निंग के स्लॉट 3 है, 3 घंटे आप लर्निंग का 3 स्लॉट्स या 4 स्लॉट में आप पढ़ते हो, हर एक 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 घंटे का स्लॉट है आपका. तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत डीप है, तो आप ज़्यादा लर्निंग सेशन या लर्निंग के स्लॉट्स नहीं कर पाओगे. इसका मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ किसी चीज़ों में, तो आई विल नॉट एबल टू परफॉर्म विद दिस 4 and 5. फॉर एग्जाम्पल, मतलब 3 ही परफॉर्म कर पाऊंगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज़ अ लोअर फोकस एंड कंसंट्रेशन विथ एज कम्पेयर टू विथ मी. सो याद रखना, अगर जितना आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, उतने कम पढ़ाई के स्लॉट आप कर सकते हो. और जितना और थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल होगा, तो ही कैन परफॉर्म 4 to 5 बाउट्स ऑफ लर्निंग इन अ डे. बट जितना ज़्यादा फोकस होता है, उतना आप कम
समय तक फोकस कर पाते हो और उतने कम आपके लर्निंग सेशंस होते हैं. Now let's see the tools for sharpening your focus and concentration. First and the foremost important tool is nothing but the good amount of rest. That is nothing but the sleep. I have already told you in the, if you want to sharpen your memory, if you want to have a strong willpower, आपका memory, आपका willpower, your motivation, and your focus and concentration and number of things are dependent on the amount of sleep you take each day. Now this is, I don't know, in this today's society this is a very controversial topic, but you should have at least 6 to 7, recommended is 8 hours of sleep, but at least you should have 6 to 7 hours of sleep each night. बिकॉज अगर आप ढंग से सोते नहीं हो तो ना आपका मेमोरी शार्प रहेगा, ना आपको विल पावर होगा, ना आपके पास मोटिवेशन रहेगा, ना आपके पास फोकस एंड कंसंट्रेशन होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इम्पैक्ट्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर आप ढंग से सोते नहीं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पैक्ट होता है. यू विल पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड नंबर ऑफ इट अफेक्ट्स नंबर ऑफ हेल्थ मेट्रिक, अदर हेल्थ मेट्रिक्स. सो पहला टूल जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी नींद लो. If you have a good amount of rest, then second day you will have a good focus and concentration. Now मैं आगे जो भी टूल डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी प्री रिक्विसाइट कंडीशन क्या होगी कि यू आर टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया तो आप, मैं आगे कितना जो टूल्स बताने वाला हूँ वो कितने भी टूल्स फॉलो करो फिर भी आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव नहीं होगा. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग what kind of significant role sleep plays in our life. Yeah, I do understand sometime what happens कि कुछ emergency आ जाती है और there will be situations, inevitable situation in your life where you will not able to take a proper rest. कभी कभी हम proper rest नहीं ले पाते हैं कुछ emergency के कारण. तो at that time सेकेंड डे को, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इमरजेंसी के कारण प्रॉपर सो नहीं पाए और दूसरे दिन अगर आपका टेस्ट वगैरह है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस योगा निद्रा. योगा निद्रा इज नथिंग बट अ स्लीप योगा. इसे एनएसडीआर भी बोला जाता है. एनएसडीआर, दैट इज नथिंग, नॉन स्लीप डीप रेस्ट. दिस इज नथिंग बट अ नॉन स्लीप डीप रेस्ट. तो दिस इज अ स्लीप योगा. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्लीप डिफिशिएंट, जब आप ढंग से सो नहीं पाए और नेक्स्ट दिन अगर आपका कोई मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म द स्लीप योगा. ऑल यू नीड टू डू इज, दिस इज अ वेकिंग अप ऐप विच आई फॉलो ऑन अ डेली बेसिस. दिस इज अ फैंटास्टिक मेडिटेशन ऐप. यहाँ पे जाके आप, यू कैन गो एंड डू द योगा निद्रा. इट्स अ स्क्रिप्ट होता है एक्चुअली जो आपको बस कान में लगा के सुनना पड़ता है. अदरवाइज यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड नो, यू कैन टाइप सर्च ओवर देयर योगा निद्रा. तो आपको नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे एंड यू कैन गो एंड शार्पन योर फोकस एंड कंसंट्रेशन. शार्पन नहीं, बट स्टेबल रहेगा, ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा उसका. नाउ थर्ड इज नथिंग बट द बाइनोरल बीट्स. बाइनोरल बीट्स, इसको समझने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड these are the different waves of your mind. So this is something called gamma. Gamma waves क्या होती है? This is the state of mind where you have a high level of focus and concentration, memory recall भी. जब कभी आपको हाई फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका माइंड कौन से स्टेट में जाता है? गैमा. और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रॉम 30 हर्ट्स टू 100 हर्ट्स. नाउ दिस बाइनोरल बीट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन ऐप कॉल्ड ब्रेन वेव. ये आपको ऐप ब्रेन वेव्स है विच आर यूज. इसको आप, व्हाट यू नीड टू डू, ऑल यू नीड टू गो ऑन द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. और वहाँ पे जाके आपको क्या है, 40 हर्ट्स, 40 हर्ट्स पे सेट करना है इसको एंड यू नीड टू लिसन इट. तो यू विल गेट, योर माइंड विल एंटर इनटू 40 हर्ट्स में जाके, योर माइंड विल इनटू enter into the gamma waves kind of state में, and you will enter into the state of deep focus and concentration. तो वो जल्दी आप उस फोकस एंड कंसंट्रेशन में जा सकते हो. तो इसको यूज कब करना है? यू कैन यूज इट प्रायर टू द वर्क विच यू वांट टू डू. जो फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ आप जो काम करना चाहते हो उसके पहले भी यूज कर सकते हो. और यू कैन यूज इट ऑन अ डे
during performing the task also. It depends on you. Now the fourth tool is nothing but the coffee. Now, coffee is very important. Now, there are a lot of myths when it comes to consumption of the coffee. Coffee contains caffeine. सबको पता है. This caffeine, it helps you in three ways. First, caffeine makes you alert. एक kind of alert बना देता है. Second, it also has adrenaline. Adrenaline को ही हम epinephrine भी बोलते हैं. इपिनेफ्रिन, तो ये जो इपिनेफ्रिन होता है, ये आपका फोकस पे, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फोकस पे इम्पैक्ट होता है इपिनेफ्रिन का. एंड थर्ड इज दैट इट इंक्रीज द इफिकेसी ऑफ द डोपामिन. जो डोपामिन होता है हम अपने माइंड में, तो डोपामिन की इफिशियंसी बढ़ाता है काम करने की. सो डोपामिन सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं माइंड में, तो उस न्यूरॉन सेल की इफिशियंसी वो बढ़ा देता है. सो दिस इज द थ्री टास्क. कॉफ़ी, मतलब ये चार बेनिफिट्स आपको कॉफ़ी से मिल सकते हैं. फर्स्ट, ये अलर्ट बना देगा, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा. नाउ द टाइमिंग व्हेन टू कंज्यूम द कॉफ़ी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू आर कंज्यूमिंग द, यू शुड कंज्यूम द कॉफ़ी आफ्टर गेटिंग वेकिंग, आफ्टर 1 hour ऑफ वेकिंग अप, आफ्टर 1 hour ऑफ वेकिंग अप एंड बिफोर 2 p.m. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे उठते हो, तो यू शुड ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर 7 a.m. 7 बजे के बाद आपने कॉफ़ी पीना चाहिए, और 2 बजे से पहले. If you drink a coffee at night, never ever drink a coffee at the night. I know you must have watched it on a movie, and बहुत जगह पे देखा होगा, number of people drink a coffee at night. This is the stupidest thing you can do, because if you are drinking the coffee at night, it has caffeine, and caffeine interrupts your sleep cycle. तो आपका कैफीन क्या है? इट टेक्स नियरली 7 to 8 hours टू गेट कैफीन आउट ऑफ योर सिस्टम. अगर वो अगर कैफीन है, तो वो आपको सोने नहीं देगा, एंड इट इम्पैक्ट्स योर स्लीप आर्किटेक्ट. एक्चुअली जो भी आपके मेमोरी, फोकस एंड कंसंट्रेशन, विल पावर, उसके बाद मोटिवेशन के जो बेनिफिट्स आपको स्लीप देगा, वो आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज द स्वीट स्पॉट वेयर यू कैन ड्रिंक द कॉफी एंड reap a maximum benefits from this coffee. Now, one important thing we need to keep it, you need to take into cognizance is this: when you are drinking coffee, when you are using coffee as a tool, at that time, try to hydrate yourself as much as possible. मतलब जब आप कॉफ़ी पीते हो, तो पानी भी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इनफैक्ट जहाँ अगर आप कॉफ़ी पियो या ना पियो, you should always hydrate your mind. So you need to always be hydrated, because mild hydration has a direct impact on your focus and concentration. So drink as much water as you can. Now, fifth tool is nothing but the stress. Now, most of you must be thinking stress कैसा focus and concentration बढ़ा देता है. Now, this is a research paper which I was going through. There is a which was got published into a Journal of Experimental Psychology in 2020. The title of the paper was "Acute Stress Improves the Concentration and Performance." This is authored by D. Groot. Now, this paper was very interesting when I was going through it. Now, the I will tell you the what was the result in a nutshell of this paper. Now, most of us know that perception determines everything. In fact, there are very good lines. We don't see the things as they are, we see the things as we are. हमें चीज़ें वैसे नहीं दिखती है जैसे चीज़ें होती है, हमें चीज़ें वैसे दिखती है जैसे हमारा नज़रिया होता है. So perception determines each and everything. So, अगर आप if you can see the beauty in others, if you are able to see the beauty in others, it simply means that that beauty is present inside you. मतलब आप चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया कैसा होता है, that determines everything. We all know. In the same way, अगर आप स्ट्रेस को इस नज़रिए से, आप स्ट्रेस को किस परसेप्शन से देखते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये इस रिसर्च स्टडी में पाया गया था. अगर आपको कभी स्ट्रेस आ रहा है और आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रेस मुझे मोटिवेट कर रहा है, इसके कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो सेम इम्पैक्ट इसके आपको आपके बॉडी में दिखेंगे. अगर आप निगेटिव सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल, इस स्ट्रेस के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके मेरे फोकस नहीं लग रहा है, तो सेम इम्पैक्ट आपको आपके बॉडी में दिखेंगे. सो दिस परसेप्शन इज़ द की. आप
चीज़ों को किस तरीके से देखते हो, दैट डिटरमाइंस एवरीथिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, चीज़ें वैसे नहीं होती है जैसे चीज़ें वैसे नहीं होती है कि जैसे वो चीज़ें, वी डोंट सी द थिंग एज वी डोंट सी द थिंग एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो अगर स्ट्रेस आ भी रहा है, इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, तो वो आपका पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा एंड इट विल इंक्रीज योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। Now the sixth tool, that is nothing but this is the cold bath, cold shower or cold bath. In fact, this is a, this is a therapy. In Western countries, people are using it as a therapy. Now there was a study published in the European Journal of Psychology, जिसमें बताया गया था कि जिसकी ये रिसर्च आई वाज गोइंग थ्रू, एंड कोल्ड शावर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोल्ड शावर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डोपामिन as well as epinephrine. And I already told you these three chemicals are very important: dopamine, epinephrine, and acetylcholine. In fact, in research it was found this level of dopamine almost become double. तो जितना डोपामिन का लेवल है, और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो डोपामिन का लेवल डबल हो जाता है। एंड यू ऑल ऑफ यू नो दैट डोपामिन इज ऑल्सो हैप्पीनेस केमिकल। ये क्या है हैप्पीनेस केमिकल? इसका मतलब क्या है? इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट on your mood also. When you take a, if you are taking a bath with the cold water, to it will increase your happiness level. It has a direct impact on your mood, and also it increases your focus and concentration. So take a bath with the cold water. Now how much cold the water should be? It should be cold enough that you feel uncomfortable, and it should not be cold enough that you hurt yourself. मतलब उतना कोल्ड होना चाहिए जहाँ पे आपको गूज़बम्प्स आ जाए आपके बॉडी के ऊपर, यू फील शिवरिंग, देयर शुड बी अ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होनी चाहिए, सांस फूलनी चाहिए, एंड वो ज़्यादा इतना भी कोल्ड नहीं होना चाहिए कि आप खुद को हर्ट कर दो। So this is the sixth tool to increase your focus and concentration. Apart from increasing focus and concentration, cold shower also increases your immunity power. आपका immunity power भी बढ़ जाता है, and as I already told you, it has a direct impact on your mood. आपका mood काफ़ी अच्छा बन जाता है because it releases dopamine, which is one of the happiness chemicals. Now, she is Wendy Suzuki. Sh- She is Wendy Suzuki. She is a professor of neuroscience and psychology in New York University. Her lab now, she is the most famous personality in the field of memory. मेमोरी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड रिनोड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मेमोरी, सबसे ज़्यादा काम शी इज डूइंग राइट नाउ। हर लैब has conducted different experiments, and it shows that कि performing a meditation, daily meditation for 13 minutes for the 8 weeks will result in the tremendous increase in the focus and concentration as well as memory. तो अगर आप डेली 13 मिनट 8 वीक्स तक मेडिटेशन करते हो, तो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन एज वेल एज मेमोरी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मेडिटेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस मेडिटेशन, sleep, uh, and the third, that is nothing but your physical exercise. These are the foundation of your life. These are the foundation of your learning also. अगर ये ढंग के फाउंडेशन ढंग का है, तो you can have a impact in every domain of your life. So 13 minutes 8 weeks परफॉर्म करना है, एंड प्रोवाइड, और ये चीज सिर्फ 8 वीक्स परफॉर्म करके छोड़ना नहीं, यू नीड टू परफॉर्म इट अगेन, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके memory as well as focus and concentration पे होते रहेगा। Now the another tool that will help you in focus and concentration is fasting. Now फास्टिंग का एक्चुअली आपको याद रखना है कि व्हेन यू, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ लाइट लंच और डिनर। पढ़ाई के पहले अगर थोड़ा कम खाते हो, सीमित लिमिट में खाते हो, तो उसका आपका इम्पैक्ट होता है। नाउ दिस फास्टिंग हैज़ अ यू शेप कर्व, मतलब दिस एंड ऑफ द, ये क्या दिखाता है कि व्हेन यू आर नॉर्मली फेड लाइट वेट जब आप लाइट खाते हो,
कुछ भी चीज़ खाते हो तो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा. Now, because your neurons जो होते हैं they thrives on glucose and we get the glucose from the food. Now यहाँ पे focus and concentration ज़्यादा रहेगा. अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया and if you sit for the study तो आपका focus and concentration बहुत कम होगा. Because जब आप खाना खाते हो if you full your stomach then most of the blood will go towards the digestive system की तरफ चला जाएगा. It takes around 1400 calories to digest the food as well as blood. Lot of mental instruments get used in digesting the food. That's why आप जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है and consequently आपका focus and concentration कम होता है. बट अगर आप फास्ट करते हो तो ऑलमोस्ट जब आपके पेट में कुछ भी नहीं होता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सीधा कहाँ पे जाता है कि अब डाइजेशन में पेट में तो कुछ नहीं है. इसका मतलब जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है यूज होता होना चाहिए था वो ब्लड सीधा कहाँ एंटर करेगा आपके ब्रेन में. Now, when it will enter in your mind, you will have a sharp focus and concentration. That's why this question, यह question हमेशा मेरे एक this question always used to linger in my mind that how people like Dr. B.R. Ambedkar used to study empty stomach. मतलब जो बी आर अम्बेडकर हमने सबने सुना होगा कि बी आर अम्बेडकर जो पढ़ाई करते थे तो एम्प्टी स्टमक पढ़ते थे तो हमेशा क्वेश्चन रहता था कि हाउ ही वाज एबल टू डू इट. सो वन ऑफ द रीजन इज दिस न्यूरो साइंस की व्हेन यू आर इन अ फास्टेड स्टेट आपके जब स्टमक पूरा एम्प्टी है कुछ भी नहीं है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा माइंड की तरफ जाएगा एंड इट विल डायरेक्टली हैव इम्पैक्ट इन योर फोकस एंड कंसंट्रेशन. नाउ नेक्स्ट टूल इज नथिंग बट ये चीज़ आपको याद रखना योर विजुअल फील्ड ड्राइव्स योर कॉग्निटिव फोकस. इसका मतलब ये है कि जहाँ आपकी आंखें जाती हैं वहाँ पे आपका कॉग्निटिव फोकस जाता है. नाउ वी कैन यूज दिस टूल. ऑल यू नीड टू डू इज पिक अ स्पॉट एक पिक अ स्पॉट ऑन द वॉल. कोई भी चीज इफ यू नीड इंस्टेंट फोकस एंड कंसंट्रेशन आपको क्या करना है कोई भी आपके आगे कोई दीवार हो या कोई चीज़ हो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ऐसा स्पॉट पकड़ना है छोटा सा स्पॉट पकड़ना है और उस स्पॉट की तरफ आपको एट 3 सेकेंड्स तक 3 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक देखते रहना है. ना जब आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट आंखें फाड़ के मत देखना. यस ऑफ कोर्स यू कैन ब्लिंक योर आईज. आप आंखें यू कैन ब्लिंक योर आईलिड्स या आप ब्लिंक कर सकते हो. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आपका फोकस उस पॉइंट से हट जाएगा तो आपको वापस उसके ऊपर फोकस करना है. दिस वेरी स्मॉल एक्सरसाइज विल help you in sharpening your focus and concentration and that too instantly. So if you take my recommendation first try with the 3 seconds and eventually you can increase your time to the 3 minutes. तो जब कभी आप एग्जाम में बैठे हो या आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लग नहीं रहा है पढ़ते टाइम पे सिंपली आप क्या कर सकते हो कोई भी चीज़ पकड़ो दीवार पे एंड छोटी सी चीज़ को पॉइंट के ऊपर फोकस करो 3 सेकेंड्स या 3 मिनट तक यू विल हैव अ फोकस एंड कंसंट्रेशन बिकॉज विजुअल फील्ड ड्राइव्स कॉग्निटिव फोकस. Now, these are certain supplements you can take in order to improve your focus and concentration. First, this is nothing but omega 3 essential fatty acids. ये अगर आपके अपने रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किया तो कंज्यूम कितना है 1 ग्राम to 3 ग्राम पर डे तो इट विल इम्पैक्ट योर फोकस एंड कंसंट्रेशन मतलब बढ़ेगा आपका. नाउ फूड्स विच आर रिच इन ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स आर दिस. आप ये लिस्ट देख सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो और अगर ये चीज़ें आप खाते हो तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर फोकस एंड कंसंट्रेशन. Second is creatine monohydrate. Creatine monohydrate 3 grams per day. Actually, I have started taking this creatine monohydrate. I started taking this creatine monohydrate because I wanted. I go to gym. I'm to the habit of gym. It's good for muscle growth, but recently I came to know that it also has a direct impact on your focus and concentration. In fact, overall आपका पूरे माइंड का कॉग्निशन प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फंक्शनिंग बढ़ाने में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए आप क्रिएटिन लो. क्रिएटिन फोकस एंड कंसंट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल यू नीड टू टेक द 3 ग्राम्स पर डे ये चीज़ याद रखना. Third is L-tyrosine. L-tyrosine is nothing but the precursor of dopamine. Dopamine को बनाने
बनाने में किसका रोल ज़्यादा होता है? एल टायरोसिन का। एंड यू नो दैट डोपामिन इज वन ऑफ द केमिकल्स विच इज इंपॉर्टेंट इन फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो अगर इफ यू कंज्यूम फूड्स विच आर रिच इन एल टायरोसिन, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दीज आर द फूड्स विच आर rich in L-tyrosine. You can go through it by pausing the video and start consuming it. So you will have a improvement. You can see the improvement in your focus and concentration. I hope that's it for today. I hope you like this video. If you like this video, make sure that you like it, comment and share it. Don't forget to subscribe my channel. You can connect with me through the Instagram. Life School is my channel. Thank you guys. Thank you for listening this video. Thank you. Thank you. Thank you very much.